Hello everyone, welcome to Enviro Pioneers. In this video, we will learn about noise indices and their calculations. In lecture 12 of the noise pollution playlist, we learned about different instruments which are used to measure the sound or the noise. So let us go through the CPCB guidelines of the noise monitoring. So here we have the protocol for the ambient level noise monitoring. अभी तक हमने लगभग सारे कंसेप्ट कवर कर लिए, तो अब जब हम ये गाइडलाइन को पढ़ेंगे तो इट विल बी इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड. In the initial part of this guideline, here we have the purpose and introduction to the protocol for ambient level noise monitoring. Let us see about the criteria for the site selection. यानी कि जहाँ पे भी हम ambient noise monitoring कर रहे हैं, that particular place should be falling in the industrial, commercial, residential or silent zone. एंड जिस प्लेस पे हम ये मॉनिटरिंग कर रहे हैं इट शुड बी लोकेटेड एट द एम्बिएंट लेवल, यानी कि ये डायरेक्ट सोर्स के पास नहीं होना चाहिए, किसी भी वाइब्रेशन या ऑब्स्ट्रक्शन के पास नहीं होना चाहिए, और वो पर्टिकुलर प्लेस का एक डिफाइंड लैंड यूज पैटर्न होना चाहिए. एंड जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं इट शुड बी प्लेस्ड ऑन द ट्राइपॉड स्टैंड एट अबव द ग्राउंड लेवल ऑफ 1 to 1.5 मीटर फॉर द एरियाज. देन वी हैव द केस स्पेसिफिक लोकेशंस. इसके अंदर हमारे पास 4 पॉइंट है. First point is mentioned कि if the DG set, that is diesel generator set, if it is having the power capacity of up to 800 kilowatt, तो इसका जो noise monitoring है it should be about 1 meter distance from all side. लेकिन अगर DG set की capacity 800 kilowatt से ज़्यादा है, then in that case the noise monitoring should be done at about 1 meter distance of the acoustic enclosure. And it is also mentioned that concerned state pollution control board or pollution control committees may regulate the norms with minimum reduction of 25 A weighted decibel to see the effectiveness of the enclosure. So to understand this, we have one diagram. So here we have the DG set up to 800 kilowatt. तो जहाँ पे भी ये place है, इस particular setup के 1 meter distance in all the direction हमको noise monitoring करनी है. लेकिन अगर DG set की जो capacity है that is more than 800 kilowatt, so these DG setups are placed inside the acoustic enclosure, यानी within a wall. और ये जो acoustic enclosure बनाया गया है वो तभी effective माना जाएगा जब यहाँ पे जो भी sound level generate हो रहा है उसको वो 25 decibel reduce कर सके. यानी अगर यहाँ पे जो noise level है 100 decibel, तो outside this enclosure it should be लेस देन 75 डेसिबल, यानी कि 25 डेसिबल रिडक्शन इस इनक्लोजर के थ्रू होना चाहिए. एंड इन दिस केस इफ नॉइज मॉनिटरिंग इज डन, तो ये जो इनक्लोजर है इसके 1 मीटर डिस्टेंस इन ऑल द डायरेक्शन हमको नॉइज मॉनिटरिंग करनी होती है. In case of the petrol and the kerosene generator set, sound power level is measured in anechoic room so as to have the segregated noise level. In case of the firecracker, noise monitoring should be done 4 meter away from the bursting point, or there should not be any reflecting surface within 15 meter radius. और अगर हम व्हीकल के केस में कर रहे हैं तो it should be 0.5 meter away from the exhaust point. अब जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं that should be placed 1.2 to 1.5 meter above the ground level, and in the dry condition the wind speed should be less than 5 meter per second, and the instrument should be placed in such a manner that it is isolated from the strong vibration and the shock. Next is the selection of the noise level meter. So instrument that should be used in the noise monitoring is the type 1 integrating sound level meter with the free field microphone, and it should meet the accuracy of the noise measurement as per the IEC 804 grade 1 और ANSI type 1 और equivalent IEC 61671 class 1 type of sound level meter. ये हमने last video में discuss किया था. Next we have the calibration which can be done using the calibrator. This calibrator generates the sound level of two values 94 decibel and 114 decibel on 1000 Hz frequency. And if our instrument is showing more than plus minus 0.3 decibel difference, then calibration is adjusted, and after that only the instrument is ready for the monitoring. और जब भी हम मॉनिटरिंग करते हैं उसके बिफोर और आफ्टर हमको कैलिब्रेशन चेक करना होता है, एंड इफ द इंस्ट्रूमेंट इज शोइंग द रीडिंग विद इन प्लस माइनस 1 डेसिबल, देन ओनली जो हमने जो मेजरमेंट्स किए हैं उसकी रीडिंग एक्सेप्टेबल होती है. Then we have the monitoring time. So the monitoring, it should be carried out minimum 75% of the prescribed daytime
that is 6 a.m. to 10 p.m. and the night time that is 10 p.m. to 6 a.m. यानी अगर हम डे टाइम और नाइट टाइम में मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो एटलीस्ट 75% ऑफ द टाइम हमको ये मॉनिटरिंग करनी होगी. मीन्स द मॉनिटरिंग हैज टू बी कैरिड आउट एटलीस्ट फॉर 6 to 8 hours for the daytime and for the night time. Then we have the monitoring parameter. Here we have the LEQ, L10, L90, L50, L maximum, L minimum. तो ये जो पैरामीटर्स हैं हम आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले. And then we have the monitoring protocol. So here it is mentioned that during the ambient noise monitoring, sound comes from more than one direction. So it is important to choose a microphone and the mounting which gives the best possible omnidirectional characteristics. It means it should be able to capture the sound coming from all the direction. Then the noise measurement equipment will be supervised continuously during the monitoring period and notes will be made of the date, time and the prevailing weather condition. Immediately prior to and following each noise measurement session, the accuracy of the noise level meter shall be checked. Noise measurement should not be made in the fog and the rain, and the windshield should be used at all the times to prevent the interference of the reflecting noise. And in case of the extreme condition like the low flying aircraft and the road traffic passing in front of the microphone, the pause facility on the noise measurement equipment should be used. Then we have the monitoring records. मीन्स जब हम मेजरमेंट ले रहे हैं तो उस टाइम में हमको क्या क्या चीजें नोट करके रखनी चाहिए. So that is the date, time, location and duration of the measurement, all the predominant noise sources and the weather condition like the wind speed and the approximate direction, cloud cover. So you can go through this particular PDF. Then we have the monitoring data submission, monitoring inferences. So this is for the CPCB. But if you are doing the monitoring of the noise level, you can follow this guideline for your study also. In the last video, we also came across a term time-weighted constant. So with respect to that, we have some of the abbreviations that are mainly used in the noise-related studies. So here we have the LAF, LAF maximum and LAF minimum. So LAF, it represents A-weighted sound level which is measured with a fast time constant. Then we have the LAF maximum. So it is A-weighted maximum sound level which is measured with the fast time constant. अब यहाँ पे ये maximum जो है that is the maximum value during the measurement. This is not the peak क्योंकि जब हमको peak value measure करनी होती है then in that case we use the C-weighted sound level. So here maximum it represents the maximum reading of the sound level during the measurement. Likewise LAF minimum it represents the A-weighted minimum sound level which is measured using the fast time constant. इसी तरीके से we have the LAS, LAS maximum, LAS minimum, A-weighted sound level which is measured with the slow time constant. Likewise here it is A-weighted maximum sound level measured with the slow time constant, and here we have the A-weighted minimum sound level measured with the slow time constant. ISO 1996 standard series, it describes the noise monitoring in the community environment taking into consideration short time measurement as well as the continuous noise monitoring, and the methods and the procedures they are intended to apply to noise from various sources like the traffic noise, transportation noise, aircraft noise or the industrial noise. If we are doing the noise measurement from the single events, for example, if in the case of the road traffic noise, अगर कोई ट्रक पास हो रही है या फिर कोई लो एल्टीट्यूड पे कोई एयरक्राफ्ट पास हो रहा है या फिर रेल ट्रैफिक के केस में कोई ट्रेन पास हो रही है, तो उस पर्टिकुलर केस में ISO 1996-2 it suggests the uses of the sound exposure level, the maximum sound pressure level and the peak sound pressure level. But for the continuous sound measurement such as the transformer or the cooling towers, the equivalent sound pressure level over a time interval is used that is represented as LAEQ. In CPCB protocol for the ambient noise monitoring, we came across the parameters like the LEQ, L10, L90, L50. So these are referred as the noise descriptors. These are the quantitative matrices which are used to describe and evaluate environmental noise level over the time. Since noise it is a fluctuating physical quantity,
So these noise descriptors, they help in assessing its intensity, duration and potential impact on the human health and the environment. And they are particularly useful in the environmental impact assessment, urban planning and the regulatory frameworks. So let us start with the equivalent noise level. It is a way to represent the fluctuating noise level as a single constant sound level over a specific time period. For example, हमने 1 hour के लिए noise monitoring की at the interval of 1 minute. So now we have the 60 data for 60 minutes and for each of the minute we'll be having some of the sound level. So ये जो fluctuation है, it represent the variation in the sound level measured at each minute within this particular hour. अब अगर हमको ये 1 hour में जो नॉइज लेवल है उस पर्टिकुलर प्लेस पे अगर हमको उसको एक सिंगल वैल्यू में रिप्रेजेंट करना है, फॉर दैट वी हैव द इक्विवेलेंट नॉइज लेवल which is defined as the sound level in decibel having the same total sound energy as the fluctuating level measured. So यहाँ पे अगर सेकेंड इमेज में हम देखें the equivalent continuous sound level in decibel. So ये जो लाइन है that is representing the equivalent continuous sound level which is having the same acoustical energy as these measured data for the entire duration are having. So this equivalent continuous sound level, it is also known as the time average sound level, which is abbreviated as LAT. If the noise is measured using the A weightage, then it is written as the LAEQ, that is the A weighted equivalent continuous sound level in decibel. Equivalent sound level या noise level को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं LAEQT, which represent the A weighted equivalent continuous sound level measured over a specified period of time. क्योंकि जो community और industrial noise measurement है that are the frequency weighted because it is done mainly to see the effects on the human. तो उस केस में हम जनरली A weighted सिलेक्ट करते हैं, इसलिए जो LAEQ and LAEQT these descriptors are widely used. Let us see some of the examples related to this. Here we have LAEQ 8 hour. So it is A weighted equivalent continuous noise level which is measured over the period of 8 hours. And then we also have the LAEQ 6 hour, then we have the LAEQ 16 hour, then here we have the LAEQ 18 hour. अगर आप यहाँ पे सबकी definition देखो same है, that is the equivalent continuous sound level in decibel which contains the same sound energy as the actual fluctuating sound that occurred in that period. But यहाँ पे जो duration mentioned है that is different for each of the case. So this is as per the UK government environmental noise definition. LAEQ 6 hour, it represents the noise monitoring over the period of midnight to 6 a.m. in the morning. Then LAEQ 16 hour, it represents the noise monitoring over the period from 7 a.m. to 11 p.m. in the night. Then here we have the 18 hour that is for the period of 6 a.m. to 12 midnight. This duration which is mentioned here, it is as per the UK government environmental noise definition, but this duration it may vary from country to country as per their guidelines. फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने सीपीसीबी के प्रोटोकॉल में देखा जो नॉइज मॉनिटरिंग है इट फॉर द डे टाइम इट इज फ्रॉम द 6 a.m. to 10 p.m. in the night एंड जो नाइट टाइम मॉनिटरिंग है दैट इज फ्रॉम द 10 p.m. to 6 a.m. तो कंट्री टू कंट्री ये ड्यूरेशन वेरी कर सकता है बट दिस इज ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग कि हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं. As equivalent noise level, it measures only the energy content of a noise over a period of time. So the noise with different characteristics like the fluctuating, which is from the traffic, or the impulsive noise from the hammering, they can have the same LEQ level. हम जो साउंड लेवल मीटर यूज करते हैं फॉर द नॉइज मॉनिटरिंग वी हैव द फैसिलिटी ऑफ गेटिंग द LEQ वैल्यू डायरेक्टली फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट or we can use the integrating sound level meter that is a specialized instrument mainly to measure the equivalent continuous noise level which calculates the value of the LEQ based on this formula. So here we have the 10 log in bracket 1 divided by T2 minus T1. Then here we have the integration from T1 to T2 of all the quantities which are measured for entire duration. So here we have the acquired sound pressure that is the measured sound pressure.
divided by the reference pressure level, that is 20 micropascal, into delta T, that is the time duration for which this sound pressure was measured. ये फॉर्मूला हम जनरली तब यूज करते हैं जब हमारे पास मेजर्ड साउंड प्रेशर है और टाइम ड्यूरेशन मेंशन है. बट अगर हमारे पास डायरेक्टली साउंड लेवल मेंशन है, then we can use this particular formula to calculate the equivalent continuous sound level. 10 log to is 10, in bracket we have 1 by t. This t, it is the total time duration of the measurement. Then we have the summation or integration of all the values which were measured for a particular time t. So here we have 10 to the power L divided by 10 into duration of the time for which this sound level was there. जब हम नॉइज मॉनिटरिंग करते हैं तो उस केस में हमको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाती है, बट फ्रॉम द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बेसिस पे वी हैव सर्टेन न्यूमेरिकल्स आज इन द यूजीसी नेट एग्जाम. So let us see two numericals on the basis of the equivalent continuous noise level. Here we have our first question. The sound level in decibel for every 5-minute interval over a 20-minute period is mentioned like this: 65 decibel, 70 decibel, 68 decibel and 72 decibel. So what is the equivalent continuous noise level? अब हम डायरेक्टली इसका एवरेज नहीं ले सकते बिकॉज द साउंड लेवल मेजरमेंट इज बेस्ड ऑन द लॉगरिथमिक कैलकुलेशन. इन केस ऐसे न्यूमेरिकल्स अगर पूछे जाएं जहां पे टाइम इंटरवल्स इक्वल हैं, then we can use this particular formula. Now हम ये calculation 3-4 पार्ट में देखेंगे. First part is this, second part is this and third part is this. So first we will convert each of the sound level into the linear scale energy. तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? We will be using this part first. तो 10 to the power L I by 10 means that particular sound level divided by 10. तो यहाँ पे हमारे पास 65, 70, 68 and 72. So we have here 10 to the power 65 by 10, we will be getting 6.5. Likewise for 70, it will be 10 to power 7. For 68, it will be 10 to power 6.8 and for 72, it is 10 to power 7.2. अब इसकी जो वैल्यूज है यहाँ पे मेंशन है. Second part of this calculation is calculate the average of the energies. For this, first we will do summation of all the values and then we will divide by n. N is the number of measurement. So we can see here E average is E1, E2, E3, E4. Here we have all the values divided by 4 because we are having the 4 measurements. So now if we calculate the average by summation of this divided by 4, we get this particular value. Now third part of the calculation is converting back into the decibel. So for this, we will be placing this particular value here. So 10 log to the power 10, in the bracket we are having this value E average. So when we calculate this, we get the 69.46 decibel, which is equivalent to 69.5 decibel. Now let us see another question which is taken from the UGC NET Environmental Science exam. So here is the question. Noise level of A weighted decibel, it exists for 10 minutes and is followed by the reduced noise level of 70 A weighted decibel for 40 minutes. Calculate the equivalent continuous equal energy level for 50-minute period. Assume 5-minute sampling interval. इसको सॉल्व करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो हमने पहले डिस्कस किया कि LEQ is equal to 10 log in bracket 1 by T, then summation and integration of 10 to the power L by 10 into duration of the time. इसको और सिंप्लीफिकेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं. सेम चीज है, दोनों फॉर्मूला सेम है बट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इज डिफरेंट. अब इस क्वेश्चन में वी हैव द ड्यूरेशन एंड द साउंड लेवल. And also to confuse, here it is mentioned assume 5-minute sampling interval. तो ये क्योंकि हमारा दोनों जो साउंड लेवल है उसका ड्यूरेशन मेंशन्ड है तो हम ये वाले पार्ट को अवॉइड कर सकते हैं. So now we will see this calculation in several steps. First, we will be converting the sound level to linear energy. So we have two sound level, 90 decibel and the 70 decibel. तो 90 decibel के लिए हम 10 to the power 90 by 10 will be getting 10 to power 9. अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं. Second sound level was 70 decibel. तो 10 to the power 70 by 10 we get
10 to power 7. अब ये हो गया this much value. Second step is we will be multiplying this particular part with the duration. अब ये जो duration है for 90 decibel it is mentioned 10 minutes. Now we will multiply this particular value into 10. So we are getting 10 to the power 10. Second sound level was for the 40 minutes. तो अगर हम अब इसको कैलकुलेट करें यानी मल्टीप्लाइंग दिस पर्टिकुलर वैल्यू विद द ड्यूरेशन, then we are getting this much value. Now third step is total energy. अब ये पार्ट हुआ समेशन, यानी कि टोटल 50 मिनट्स के लिए जो हमारा यहाँ पे साउंड लेवल है उसको हम अब सम कर रहे हैं. So that will give us the total energy. So here we have the summation of this value and this value, we get this particular value. Now fourth step is taking the average, that is divided by total time. So the fourth step is the average energy per minute. So we will be dividing E total by the total time duration, that is the 50-minute period. So when we divide the E total by 50, we get this particular value. Now fifth step is converting back into the decibel. So here is the last part of the calculation, 10 log to the base 10, and here in the bracket we are having this particular value which we calculated. तो अब यहाँ पे it is equivalent to 10 into log to the base 10 into यहाँ पे ये 2.08 into 10 to power 8 कर दिया. It is the method of representing. अब इसको further जब हम calculate कर रहे हैं तो now we have two things, log 10 in bracket 2.08 plus log 10 10 to the power 8. अब इसको जब हम फर्दर कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका जो वैल्यू है दैट इज 0.318 प्लस log 10 to power 8 is equal to 8. इसको हमने जब कैलकुलेट किया दैट इज 8.318 into this 10. So we'll be getting 83.18 decibel. अगर हम बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो ये फॉर्मूला देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें then understanding this formula is easy and इसके बेसिस पे आप different numericals ट्राई कर सकते हो. This was one of the example जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया. सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी साउंड लेवल मेंशन है उसको हमें लीनियर स्केल पे कन्वर्ट करना है, जो 10 to the power li/10 से हम सीधे कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे किया. सेकेंड पार्ट इज जो हमारी वैल्यूज आई उसको कितने ड्यूरेशन के लिए वो साउंड लेवल था उससे हमें मल्टीप्लाई करना है जैसे हमने सेकेंड स्टेप में यहाँ पे किया. थर्ड इज समेशन पार्ट, यानी कि हमने हर ड्यूरेशन के लिए जो ये कैलकुलेट किया उसको हम सम कर देंगे, जो ये हमने थर्ड स्टेप में देखा. फोर्थ इज टेकिंग द एवरेज. ये एवरेज आपको ध्यान रखना है, दिस इज द टोटल टाइम पीरियड जिस टाइम में ये मॉनिटरिंग की गई. तो जैसे इस केस में इट वाज 50 मिनट एंटायर ड्यूरेशन, तो हमने यहाँ पे 50 कंसीडर किया. 10 और 40 भी है, बट आपको ध्यान रखना है कि टोटल ड्यूरेशन जिस टाइम के लिए मॉनिटरिंग की गई वो आपको यहाँ पे इस टी में लेना है. So now you have this calculated part. तो फिफ्थ स्टेप में हमको सिंपली 10 log to the base 10 और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आई उसको हमको फर्दर कैलकुलेट करना है. अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर सकते हो, यू विल बी गेटिंग द सेम वैल्यू. बट इन केस अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लॉग टेबल यूज करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इंडेक्स इज कम्युनिटी नॉइज इक्विवेलेंट लेवल, which is abbreviated as CNEL, which is the 24-hour average noise level of all hourly LEQ measurements with a 10 decibel penalty added to the nighttime levels between 10 p.m. to 7 a.m. and a 5 decibel penalty added to the evening levels between 7 p.m. to 10 p.m. to reflect the people's extra sensitivity to noise during the night and the evening. As the monitoring is done for entire 24 hours, it is also written as LDEN, which is the day, evening and night noise level. So here we have the formula to calculate the community noise equivalent level. अगर आप formula note करो तो this is the same formula जो हमने equal time interval के केस में use किया था. तो यहाँ पे n is 24 because we are doing for the 24 hours. तो ये formula में हमने यहाँ पे ये t जो है that is n is 24. अब यहाँ पे फॉर्मूला जो है Li plus Wi. Wi is the weightage because यहाँ पे हम पेनल्टी भी ऐड कर रहे हैं, यानी कि अगर हम नाइट टाइम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो उसमें जो भी हमारा साउंड लेवल आया
उसमें हम +10 और ऐड कर देंगे। और अगर हम इवनिंग टाइम में मॉनिटर कर रहे हैं तो जितना भी साउंड लेवल आया उसमें हम 5 डेसिबल पेनल्टी ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में यहाँ पे Li plus Wi लिखा है। Wi is the weighting factor, that is the penalty based on the time of day. If it is from daytime 7 AM to 7 PM, then in that case Wi जो हो गया 0, यानी जो भी साउंड लेवल हमने मेजर किया डिवाइडेड बाई 10 करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देन फॉर इवनिंग इट इज 7 PM to 10 PM, हम जो पेनल्टी है उसमें 5 डेसिबल ऐड कर देंगे। नाइट टाइम फ्रॉम 10 PM to morning 7 AM, penalty is 10 decibel, so we have to add the 10 decibel to the measured sound level. अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हम इस तरीके से कर सकते हैं जहां पे फॉर डे, इवनिंग एंड नाइट हमने अलग अलग रिप्रेजेंट किया 1/24. नाउ हियर वी हैव द समेशन ऑफ द डे टाइम, यहाँ पे साउंड लेवल इन डे टाइम डिवाइडेड बाई 10। यहाँ पे फॉर्मूले में इटसेल्फ यहाँ पे 5 मेंशन है एंड LE की जगह हमें जो भी हमारा मेजर्ड साउंड लेवल है वो रखना है। एंड देन एट द थर्ड पार्ट हियर वी हैव द समेशन ऑफ द नाइट टाइम। फॉर्मूले में इटसेल्फ वी हैव द वैल्यू 10 which should be added to the sound level measured during the night time. So we have to keep this thing in mind that in CNEL 5 decibel penalty is added for the evening noise and 10 decibel penalty is added for the nighttime noise. And also this CNEL emphasizes human annoyance impact, not only the physical energy. If the noise level is monitored only for the 12-hour day period from 7 AM to 7 PM, it is referred as the day noise level and it is represented as L day, and it is also known as the day noise indicator. And if the monitoring is done for the day and night, it is referred as LDN. D represent for day and N represent night. So this is day-night noise level, the equivalent noise level over a 24-hour period. And here penalty of 10 decibel is added for the noise during the hours of 11 PM to 7 AM. And this day-night noise level, it is also known as the day-night indicator. Next is noise dose or daily personal noise exposure. So this is mainly calculated for the person who is working in the industry to see how much that person is getting exposed to the sound level or the noise level. So the noise dose is the total sound exposure which is normalized for a period of 8-hour working day. So when the equivalent noise level is calculated for the 8 hour, it is referred as the noise dose or the daily personal noise exposure. Noise dose and daily personal noise exposure, it is represented as LEP, D. This is the personal exposure level for entire day, or LEX 8 hour, that is the exposure level for the 8 hours. So this daily personal noise exposure or the noise dose, it is the time averaged A-weighted noise level for a nominal 8-hour working day, and it is used for assessing the noise exposure of a worker during the working day. So अगर हम equivalent continuous sound level 8 hours के लिए calculate कर रहे हैं, then in that case LAEQ, LEPD and LEX 8 hours, all the values will be the same. The noise dose criteria level is currently 85 A-weighted decibel, and if someone is exposed to a time-weighted average noise level of 85 A-weighted decibel during an 8-hour period, their noise dose is 100%. बट अगर वर्कर ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहा है जहां पे नॉइज एक्सपोजर वेरी कर रहा है फ्रॉम डे टू डे, इन दैट केस जो पर्सनल नॉइज एक्सपोजर है दैट शुड बी असेस्ड ओवर अ वीक रेदर देन अ डे, एंड इट इज नोटेड एज द वीकली पर्सनल नॉइज एक्सपोजर. सो यहाँ पे हम W अब लिख रहे हैं. सो दिस इज वीकली पर्सनल नॉइज एक्सपोजर लेवल, and it is a measure of the total noise received by an employee during a working week. So it is similar to the daily personal noise exposure, but it is calculated for a 40-hour week, 5 days working with the 8-hour duration. Next is N% exceeded level, which is written as LN. It is the sound pressure level exceeded for N% of the time.
These values represent the sound level exceeded for n% of the measurement time, and it helps to understand the distribution and variability of the noise over time. और अगर हम a weightage यूज करके noise measurement कर रहे हैं तो this ln it is often written as LAN. Let us understand this through one example. Suppose if we have to do the ambient noise monitoring at a railway station from morning to evening at the interval of 5 minutes. Okay? So हमारे पास बहुत सारी रीडिंग हो जाएगी. So suppose जब हम यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, there will be continuous noise because of the public or the vendors. Let us assume कि ये जो consistent noise level reading है, that is falling in the range from 50 to 60 decibel. There will be certain scenario जब यहाँ पे ट्रेन पास कर रही है या फिर ट्रेन की हॉकिंग हो रही है, उस केस में नॉइज लेवल और एक्सीड करेगा. सो सपोज अब ये जो नॉइज लेवल है दैट इज फॉलिंग इन द रेंज ऑफ 80 to 90 डेसिबल. In case there is announcement plus honking of the train, in that case the noise level may exceed 100 to 110 decibel. So suppose अगर हमने 12 hours के लिए इस रेलवे स्टेशन पे मॉनिटरिंग की, so there will be certain time duration जिसमें noise level was exceeding more than 100 decibel. There will be certain time duration जिसमें noise level was exceeding more than 80 decibel. And there was majority of the time जिसमें noise level was falling in the range of 50 to 60 decibel. तो इसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहें कि कितने टाइम के लिए नॉइज लेवल एक्सीड हो रहा था, वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, यानी कि टाइम फॉर विच द साउंड एक्सीडेड मोर देन अ पर्टिकुलर लेवल. इस एग्जांपल में यहाँ पे 65 डेसिबल कंसीडर किया है. तो टाइम फॉर विच द साउंड लेवल एक्सीडेड 65 डेसिबल divided by total time for which the sound was measured multiplied by 100, it will give n% exceeded level. And this n, it may be anything from 1 to 99. But the commonly used value of n for the n% exceeded level are 10, 50 and 90. So let us see what are L10, L50 and L90. So L10 is the sound level which exceeded for 10% of the time during which noise monitoring was done. It represents higher or the maximum noise level which is often caused by short duration loud events like the passing vehicles, aircraft or construction. And it is commonly used to quantify the traffic noise or other intrusive intermittent noises. For example, if L10 is 80 decibel, it means the noise was greater than 80 decibel for 10% of the time. Next is L50. L50 is the level which exceeded for 50% of the time, and it is actually the midpoint of the noise reading, and it is also referred as the median of the fluctuating noise level. It provides a central tendency for fluctuating noise and is useful in general environmental assessment. For example, if L50 is equal to 70 decibel, it means half of the time noise was above 70 decibel and half of the time it was less than 70 decibel. Next is the L90. So this is the sound level or the noise level which exceeded for 90% of the time. It is generally considered to be representing the background or the ambient level of a noise environment. For example, in this case, if L90 is equal to 45 decibel, it means the noise level was above 45 decibel for 95% of the time. So here we have the representation of the sound pressure level, and on the x-axis we have the time. Here red line is representing the L10 value, green one is representing the L50 and here we have the L90. तो यहाँ पे ये total duration हुआ, तो 10% of the time the sound was above this particular value. L50 में 50% of the time, यानी कि ये जो total duration है इसके 50% of the time the noise was above this particular level. और similarly for L90, यानी कि 90% of the time the sound was above this particular value. And please keep this thing in mind that in any scenario, L10 will always be greater than L50
L50 will always be greater than L90. Suppose L1, L5 और L10 पूछा है, तो उस केस में L1 will be always greater than L5, L5 will be greater than L10, because for only 1% of the measured time the sound was above that particular level, but for the rest of the 99% of the time the sound was less than that level. तो हमेशा ये जो वैल्यू है वो आपको ध्यान रखनी है, ये जितना कम इसका मतलब साउंड लेवल उतना ज्यादा. On the basis of L10, L50, L90, we have several numericals in the entrance exam or the competitive exams. We are considering here two examples. First question is, assume you have n number of noise level measurement taken at equal time intervals every 1 minute or every 5 seconds. So here we have the sound level data in the decibel and total number of readings are 10. Okay, so to calculate L10 and L90 for this particular set of data, first thing we have to do is arrange the data in descending order, means highest to lowest. So जब हम इसको arrange करेंगे highest to lowest, we will get something like this. Okay, अब second thing जो हमको करना है to determine the rank position, यानी हमको L10 और L90 के लिए रैंक कैलकुलेट करना है. अब रैंक कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? रैंक का फॉर्मूला है n डिवाइडेड बाई 100 इंटू कैपिटल N. अब ये स्मॉल n जो है दैट इज 10 फॉर L10 और 90 फॉर L90 एंड कैपिटल N इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो फॉर L10 अगर हम रैंक कैलकुलेट करें 10 divided by 100 into 10, so it is equal to 1. So the first rank in this order represent the L10. So यहाँ पे हो गया 80. 80 decibel is the L10. So if you have to calculate the L90, rank can be calculated by 90 divided by 100 into 10. So it is equal to 9. So ninth rank in this order is L90. तो अब यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So ninth rank is 64. So 64 decibel is the L90. अब यहाँ पे एक important point जो note करने की है कि जो rank हमने calculate किया, अगर वो एक integer value है तो हम directly उस value को जो shorted list है वहां से pick कर सकते हैं. So that will be the answer. But अगर जो हमने rank calculate की, it is not an integer, it can be anything 9.1, 9.2, 9.5, 9.6. Then in that case we have two option कि जो हमारा 9th या 10th पोजीशन पे जो वैल्यूज हैं हम उसको ऑप्शंस में चेक करें, उन दोनों में से कोई अगर एक ही वैल्यूज वहां पे मेंशन है ऑप्शन में है तो हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं. But in case both the values of the sound level is there in the option of the MCQ, then in that case we can use this particular formula. यहाँ पे interpolation किया जाता है between the values at position, floor rank and the ceiling rank. अब floor rank is the first value जो इस 9.6 है, तो यहाँ पे 9th जो value है उस sorted list में that will be considered as the floor rank. इसका +1 जो है यानी इसके जस्ट बाद वाला जो पोजीशन है उसको हम कहते हैं सीलिंग पोजीशन और सीलिंग रैंक. नाउ सपोज अगर हम कंसीडर करें I, इट इज रिप्रेजेंटिंग द फ्लोर रैंक. ठीक है, F will be the decimal part of this rank, यानी हमने जो कैलकुलेट किया है तो दिस इज द decimal part of the rank. Vi is the value of the sound level at the ith position in the sorted list, or Vi plus 1 is the value of the sound level at I plus 1th position. So the sound level we can select by using this formula. यहाँ पे हो गया sound level at the ith position plus the fraction part into the sound level at the ceiling position minus sound level at the floor position. अब इसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो यूजीसी नेट एग्जाम से ही लिया गया है. नाउ इन दिस क्वेश्चन साउंड लेवल डेटा वाज गिवन एंड L90 वाज आस्क्ड. तो अब यहाँ पे ये साउंड लेवल डेटा जो है पहले हम क्या करेंगे, इट विल बी अरेंज फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट. ठीक है, सो ये हमने हाईएस्ट टू लोएस्ट इसको अरेंज कर दिया. सो वी कैन सी हियर इट इज अरेंज फ्रॉम हाईएस्ट वैल्यू टू लोएस्ट वैल्यू. टोटल नंबर ऑफ काउंट यहाँ पे अगर हम इसको करें तो दैट इज इक्वल टू 11.
अब अगर हमको L90 के लिए रैंक कैलकुलेट करनी है, सो 90 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 11, सो नाउ वी आर गेटिंग 9.9। अब ये 9.9 इंटीजर नहीं है, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 9.9, सो इट मीन्स L90 हमारा या तो 59 हो सकता है या 58 हो सकता है। यहाँ पे हम जो हमारे ऑप्शंस मेंशन है उस एमसीक्यू में वो चेक कर सकते हैं। अगर वहां पे 59 नहीं है, सिर्फ 58 है एंड अदर कुछ वैल्यूज हैं, तो हम ऑटोमेटिकली 58 को कर लेंगे एज आवर आंसर। बट इन केस इफ यू आर हैविंग बोथ द वैल्यूज 59 एंड 58 इन द ऑप्शंस, देन वी शुड गो फॉर द फर्दर पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन। So this is the formula जो अभी हमने डिस्कस किया। On the basis of this formula, sound level at the ith position, हमारा यहाँ पे रैंक क्या है 9.9, तो 9th पोजीशन पे जो साउंड लेवल है वो हम लेंगे प्लस फ्रैक्शन पार्ट दैट इज 0.9, देन इट इज मल्टीप्लाइड बाय साउंड लेवल एट i प्लस 1 यानी 10th पोजीशन पे जो है, सो दिस इज 58 माइनस साउंड लेवल एट आई पोजीशन, तो ये हो गया हमारा 59। तो यहाँ पे सेम चीज यहाँ मेंशन है 59 प्लस 0.9 इंटू 58 माइनस 59, क्योंकि 10th पोजीशन पे ये है, 9th पोजीशन पे ये है। अब इसको जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं वी आर गेटिंग 58.1 डेसिबल, सो द आंसर इज 58 डेसिबल। सो L10, L50 और L90 के बेसिस पे अगर आपको न्यूमेरिकल्स मिलते हैं कहीं पे सॉल्व करने को, तो फर्स्ट थिंग इज कि जो भी डेटा है हमको हाईएस्ट टू लोवेस्ट उसको अरेंज करना है। सेकंड, हमको रैंक कैलकुलेट करनी है। अगर रैंक इंटीजर है तो डायरेक्टली हम उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो साउंड लेवल है उसको एज एन आंसर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर फ्रैक्शन में हमारी रैंक कैलकुलेशन आ रहा है तो उस पर्टिकुलर वैल्यू के हिसाब से जो भी साउंड लेवल है अगर ऑप्शंस में है तो हम वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कंफ्यूजन है तो वी शुड गो फॉर दी लास्ट पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन जो हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप नॉइज मॉनिटरिंग से रिलेटेड स्टडीज कर रहे हो एंड अगर आपके पास एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट है, यू विल डायरेक्टली गेट द वैल्यू ऑफ द L10, L50 और L90। बट इन केस आपके पास सिर्फ साउंड लेवल डेटा है, then also you can calculate the L10, L50 and L90 on the Excel sheet. So here we have the formula L90. It is calculated using this formula equal to percentile data comma 0.1. L10 जब हमको कैलकुलेट करना है वी आर यूजिंग द सेम फॉर्मूला, ब्रैकेट में हमारा इंटायर डेटा जो है कॉमा 0.9। अब अगर आप नोट करो L90 के लिए हमने 0.1 यूज किया है, L10 के लिए हमने 0.9 यूज किया है, जस्ट उल्टा। बिकॉज इन एक्सेल अगर हम परसेंटाइल डेटा 0.1 लिख रहे हैं, इट मीन्स ओनली 10% ऑफ द डेटा इज बिलो द थ्रेशोल्ड। तो जब हम 0.1 लिख रहे हैं तो वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ L90। जब हम L10 के लिए 0.9 लिख रहे हैं, it represent that 90% of the data is below this particular threshold. तो जब हम 0.9 कर रहे हैं तो हमको L10 की वैल्यू मिल रही है, और L50 जब हमको करना है तो डेटा कॉमा 0.5। तो आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप वैल्यू मेंशन करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको L20 कैलकुलेट करना है तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला सेम रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा 0.8। L80 कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा परसेंटाइल डेटा एंड 0.2। अब इस चीज को हम एक्सेल में एक बार देख लेते हैं। सो हियर आई हैव टेकन द सेम सेट ऑफ डेटा जो अभी हमने कैलकुलेशन में डिस्कस किया। So suppose if we have to calculate L10, L50 and L90 on this set of data using Excel, तो हम simply यहाँ पे equal to percentile टाइप करेंगे। यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला में आ गया, इसको सिलेक्ट करेंगे। दिस इज द कंप्लीट डेटा, ये हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, कॉमा L10 के लिए हम क्या यूज करेंगे 0.9, इसको लिखा ब्रैकेट क्लोज दिस। सो हियर वी हैव द 65 डेसिबल। अगर हमको L90 कैलकुलेट करना है सिंपली हम इक्वल टू परसेंटाइल यहाँ पे लेंगे। सो दिस इज द फॉर्मूला, यहाँ पे अगेन वी आर गोइंग टू सिलेक्ट द डेटा कॉमा एंड देन फॉर L90 we will be writing 0.1 then equal to this. So 58 जो अभी वहां पे हमने मैन्युअली न्यूमेरिकल कैलकुलेट किया था, वी गॉट द सेम वैल्यू L90 58, यहाँ पे भी हमको 58 मिल रहा है।
सपोज अगर हमको L50 कैलकुलेट करना है तो लाइकवाइज हम यहाँ पे फिर से परसेंटाइल लिखेंगे, सिलेक्ट करेंगे, डेटा लेंगे यहाँ से, कॉमा 0.5 ब्रैकेट क्लोज एंड दिस। तो अब यहाँ पे अगर आप नोट करो L10 की वैल्यू जो है दैट इज मोर देन L50, L50 की जो वैल्यू है दैट इज मोर देन L90. So in any scenario L10 will always be more than L50, L50 will always be more than L90. Now, on the basis of L10, L50, L90 or L equivalent, we have different indices. Here, first is the noise climate. It is the range over which the sound levels are fluctuating in an interval of time, and it can be calculated using this formula. Noise climate is equal to L10 minus L90. Traffic noise index, it indicates the degree of variation in a traffic flow, and this is also expressed in the A-weighted decibel and can be computed using this relation 4 multiplied by L10 minus L90, that is noise climate, plus L90 minus 30 decibel. अब कहीं कहीं आपको ये फॉर्मूला में सीधे 4 into noise climate plus L90 minus 30 भी मिल सकता है क्योंकि L10 minus L90 is noise climate. Now, third is the noise pollution level, which takes into account the variations in the sound signal, and hence it serves as a better indicator of the pollution in the environment for physiological and psychological disturbance of the human system. So the noise pollution level is calculated using equivalent sound level plus L10 minus L90, that is noise climate, means equivalent sound level plus noise climate. So ये फॉर्मूला आपको थोड़े से याद रखने पड़ेंगे because in some of the numericals the question is asked on the basis of the formulas. So these are the references from where the content of this video have been taken. First is the reference to the CPCB protocol, and majority of the definitions which are mentioned in this particular video have been taken from this site. We will meet soon in the next video. Best wishes and thank you.